Assalamu alaikum, everyone. Today we have with us Beenish Sarfaraz, has been a fellow worker with me during my project on Planet Reimagined. Um, we had another speaker, Caleb Johnson, from the same organization, because Planet Reimagined, of course, gave me an opportunity to meet wonderful, like-minded people. So Caleb, Beenish, and myself were into three different projects, and maybe this is not intentional, but this would in some way give a highlight of all what three projects did. Beenish worked on a project related to rivers and communities, and she is a graphic designer by background. I will not speak a lot about Beenish because I want her to introduce herself. Because this is the first time, even for us as well, talking personally of the Planet Reimagined platform. So, Beenish, welcome to Climate Action Pakistan. We have this weekly podcast series or webinar series. Sometimes we have it online, which means it's live for people, but today it's not. Um, because I know it's going to be open ended and we are going to explore so many other things. Maybe that's why. You can begin with your introduction. What's your background and what are you doing now after the Planet Reimagined Fellowship has ended? What are you up to? And then we'll jump to the fellowship itself as well. Amazing. Thank you for having me, Lalaruk. I'll give a brief introduction about myself, and then one by one I can start answering all the questions. I do want to start the story that today we have this place in Karachi. It's called Meherder. It's a community center based in Liari, and then they have a weekly session going on, and currently they're working on something related to cloth swapping, which is to kind of educate young people about consumer habits and how that can lead to pollution in landfill. And I went there because I worked on a documentary related to climate earlier this year, and then they said that, can we showcase the documentary for the young people? I was like, yes, of course. And then we had like a small panel discussion where even though I went as a panelist, I got to learn so much from the other panelists. One of them was for Fisher Folk Forum, and then another artist. So that's what I just came back from. So I'm very much in the zone. I feel like this is the right segue for my day. So a little bit about my background. I'm based in Karachi. I am a graphic designer and also an artist. I curate as well. And very importantly, I teach. I teach young people and I teach at a university level. I teach multiple courses, and one of the courses that I work on is called Design for Social Change, where we take design and we think about how can it be used in a way which is not only beautiful aesthetically, but also has a functional quality and brings some sort of change while working with a particular set of community. So students are expected to go in the communities and talk about things that they feel passionate about, and they have to come up with a solution with the community. And then it doesn't have to be just a project that you do and then you're out of it. Kind of stick with it, to think about it, to keep going back. Or obviously it's a semester long thing, so your relationship's already developed. But that's something that I really enjoy doing, and that's one of the things that I do. So that's a little bit about myself. I think you're not doing justice to yourself. I saw a lot of stuff on your profile. If I'm not wrong, sorry, I don't want to put wrong names here, but there were some big names in your profile. So can you reflect on your past projects? Sure, of course. I thought we'll just take it one by one, but I'd be happy to. Okay. Just to begin with. Sure. So it's been so I graduated in 2017, and while I was studying, I was working with the community organization. The name of the organization is T2F. It's not functional anymore, but that was my first job, kind of, while I was in university. And from there, I learned a lot about the power of people and how especially young people, and how you can mobilize them for any kind of movement, no matter what you're working on. T2F was a space for dialogue and, just thinking out of the box. A lot of it was just
people coming together and having conversations, and whatever problem that they're facing, how can we kind of do it better, do it in a way which is more sustainable. That kind of opened up my mind, because before that, I think my experience was very limited. But that one experience kind of helped me see the importance of community. Then that experience led to another. This was when, after this, I started working with another community organization. We were hired as interns. We were a group of young people who came together to set up a community center in Sadr. So Sadr is an area in Karachi, the old town, and it is important because Sadr is the first area in which Karachi's first university was made. And the reason why it was made there is because there is the first publishing house, or the printing press, is there. And from there, we kind of archived stories of the people of that area. And then we got along with the artists. We kind of got to know what's happening, how are different things in the area affecting them. From there, I kind of started learning from people, and by experience and by doing. So that was like just during my university years. After that, when I graduated, I started exploring graphic design as a graphic designer. And any medium, I think if you get into too much, it's an amazing medium, of course, but I always felt like, for me as a graphic designer, something is missing. Like, I don't think this is enough as a creative. I'm sure I'm making these lovely, like, brand manuals or whatever for different brands, and I'm doing all these interesting things, but there is something that I still feel like is missing. I got to work with really nice creatives who are working at the commercial side, but I just felt like, Asha, there needs to be something more. And then during this time, I kind of discovered, I got to know about this like research method, which is called art-based research method. And one of my mentors, Dr. Habib, kind of explained the method to us and kind of took us through that. And again, what I was doing is, at this time, again, was working with a small community center, which was focused on well-being and art. And here we started exploring different kind of community engagement, basically. And one of my first project, which kind of lasted for about a year, was a mapping project where we were looking at the city as our muse. And I live in Karachi. I've always lived in Karachi. When we talk to people of Karachi, you'll find a billion problems in the city. The city is it's by the sea, and it is not entirely planned. So whenever you think about it from an urban planning point of view, you can find a lot of problems here. There's housing issues that are very prevalent. Then there are issues because of climate that people are now experiencing and becoming, like, they're using it in their everyday vocabulary. Then we also have urban flooding. In the monsoon season, it becomes very difficult for people to bear. Then we have an infrastructural disorder as well. So when we as a collective, the collective was called CFA, Center of Arts-based Methodologies and Wellbeing. When we came together, we started looking at Karachi as this place to map culturally. And in that process, we were just kind of finding a new perspective to map the city, which is, obviously, we know that there are a lot of problems. We also know that a lot of people live here. And if you're living here, there has to be something that you've discovered, or have, something that you're working with. And then we thought, maybe, okay, it'll be a good idea to talk to academics. Maybe they have something interesting to share. Or, let's talk to historians, let's talk to filmmakers, blah, blah, blah. Then the more and more that we started conversing amongst ourselves, we realized that the real culture, or the people who hold this culture together, are the people, and the people from the different communities. Because Karachi, even though it's it has all its problems, it is also very diverse. You will find different ethnicities living together in different areas. And so we thought it would be interesting if we go to these different communities and kind of learn about their experience while trying to map culture. So that, so again, through that, we understood a lot about people. So there's this area called Machar Colony, and Machar is a word which means, मुझे अभी realize हुआ कि हमने शुरू भी इंग्लिश से किया है और अभी तक हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो कि मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था,
क्योंकि अच्छा बात कराची की हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इसको एंजॉय कर पाए। आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरी गलती है, मैंने खुद ही ऐसे स्टार्ट किया। कैन वी स्विच टू उर्दू? आई एम सो ऑफ सॉरी। कोर्स, नहीं कोई मसला नहीं, आई कैन डू फ्लुएंटली एंड इंशाल्लाह। चलो सही है। सो मैं आपको फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो मैं मैपिंग के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ उर्दू में, एंड देन हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जब हमने कराची को मैप करने के बारे में सोचा, तो हम सोचे थे कि हम इसकी सकाफत को मैप करेंगे, और हम इसके लिए तो हमें जाना चाहिए उन लोगों के पास जो कि एकेडमिक्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, या कोई फिल्म मेकर, इस तरह के लोग के पास नॉलेज होगी कराची की सकाफत के बारे में। जब हमने बहुत आगे पीछे बात की, एक दूसरे से बात की, हमें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो लोग सकाफत को बनाते हैं वो तो वही है जो कि किसी कम्युनिटी का या उस एरिया का हिस्सेदार है। वो ये नहीं होगा कि अच्छा मैंने एक किताब लिखी है लियारी के बारे में, सो मेरा ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। नहीं, अगर आप लियारी से तो आपका ओपिनियन ही मैटर करता है, बिकॉज यू आर द वन हु इज लिविंग देयर, यू आप ही कहानी है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाके लोगों से बात करना शुरू की, उनसे पूछा कि आपको कराची का में क्या पसंद है, नहीं पसंद है, जस्ट जनरली बिकॉज हमारा मेथड आर्टिस्टिक होता है, तो हम थोड़ा सा वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आर्ट की मुझे ये लगता है एक ख़ास बात ये होती है कि जब आप आर्ट इस्तेमाल करते हैं, आप एक प्लेफुल जोन में आ जाते हैं, और हर चीज़ का स्टेक थोड़ा कम हो जाता है। तो आपने जो बात पहले कहनी है उसमें ऑटोमेटिकली एक नरमी आ जाती है, और फिर आप कहते तो वही बात रहते हैं, बट उसका स्टेक लेस होता है, तो आप यू कैन बी मोर ऑनेस्ट, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। सो हमने लोगों से कहा कि आप कराची को लेटर्स लिखें, वो लव लेटर्स बन गए, वो इतनी खूबसूरत शायरी बन गई। इट वाज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी एक्सप्लोर्ड विद यंग पीपल। एंड देन ऑफ कोर्स हमने और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स किए। हमने फिर हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि हमने किया था अराउंड सेम 18 to 30 के एज ग्रुप के साथ। हमने उनसे कहा था कि चलो हम एक कोलाज बनाते हैं, और व्हाट इज योर विजन एज अ यंग पर्सन फॉर कराची। और सबने कराची में इतनी हरियाली ले आए, then there were rivers and there was water, और हमने कहा कि यहाँ पे हरियाली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एंड देन इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू थिंक कि हाँ ये चीज़ें हमारी जरूरत है, हम इससे डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, हो गए हैं ऑलमोस्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट द पीपल रियली वांट बैक। फिर हमने थोड़ी सी क्वेश्चन एंड आंसर किया कि अच्छा हाउ व्हाट वुड यू डू, इसको कैसे वापस ला सकते हैं, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है एनी आइडिएशन प्रोसेस में। But that was one of the things that we worked on, which was mapping Karachi's culture. फिर इसका हमने एक वेबसाइट में इसको क्रिएट किया, सारी जितनी भी हमने चीज़ें सीखी थी हमने उसको वेबसाइट में डाला। फिर इवेंचुअली 1 साल बाद हमने जितना सब कुछ whatever that we learned, हमने एक पब्लिक फेस्टिवल किया। फिर हमने कहा सब लोग आके इसको देखें। उस पर भी हमारे पास बहुत डेटा कलेक्ट हुआ, बिकॉज वी ओपनड अप अगेन अ स्पेस फॉर पीपल टू राइट एंड टू स्पीक। एंड देन आई डोंट नो कि कोई भी आर्टिस्टिक इंटरवेंशन एक शहर को बदल तो नहीं सकती, बट आई फील लाइक कि एक आर्टिस्टिक इंटरवेंशन जरूरी इसलिए होती है क्योंकि आपको सोचने में मजबूर कर सकते हैं, हाँ यार एक और नई पॉसिबिलिटी मौजूद है। So that's one of the things that we worked on with another like within a community setting. I can speak more about the kind of things that I did, but if you have any questions, please stop me at any point in time, and then you can also speak. Yeah. So just like what you started about your today's event, cloth swapping. So this is something we have in Ireland in my university. It's very common. So normally यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में भी we buy the used clothes. I mean that's a market, that something happen. But पाकिस्तान में जो used clothes आते हैं वो I mean पहले यहाँ जो यूज क्लोथ्स का जो मार्केट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले यहाँ पे यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में, आयरलैंड, यूके, यूएसए, वहाँ पे कैटेगराइज होते हैं, उसके बाद फिर मिडिल कंट्रीज में, एंड देन वो पाकिस्तान में आता है। खैर मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मॉडल है वो ऐसे कि एनीबडी कैन लाइक गेट हैव व्हाटएवर जो भी उनके पास like whatever they want to exchange, and then वहाँ पे पूरी सारी चीजें हैंग है, और like not just कपड़े, it's everything, जूते, bags and stuff, and then there are shops. So मैं क्या करती हूँ, मुझे ऐसी जगहों पे like I have not swapped clothes yet, but मुझे काफी ऐसी छोटी, यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है बीनिश, उसको कहते हैं ब्रेक अ ब्रैक। वो ऐसी चीजें होती है जिनका ना आपको नाम भी नहीं समझ आएगा, मतलब
जब आप चीज को देखो तो मोस्टली सिरेमिक की चीजें होती हैं, आपको देख के उनकी एप्लीकेशन समझ आ जाएगी, या फिर वो सिर्फ डेकोरेशन के होते हैं, लेकिन दोज आर सो क्यूट और वो इतनी चीप प्राइसेस पे मिलते हैं कि अदरवाइज आप नॉर्मली किसी फैंसी शॉप पे जाओ तो दोज आर सो एक्सपेंसिव. And the second thing you mentioned about the love letters to Karachi, I just want to mention to my audience here that the 3 months I worked with Beenish, every time she spoke, I could see her love for Karachi. I mean, maybe it's common for all people living in Karachi. That's what I've seen. I've not lived in Karachi for a long time, so I cannot say that for myself. Like, your love for Karachi has always been evident to me, and it was, of course, very interesting. And maybe that was the reason you chose your project towards that. Love letters to Karachi से मुझे एक season याद आ गया जो love letters to homes लिखते हैं, and like I forgot the name of the season, like, and it gets really horror at the later stage. So it was just thing. Beenish, can you talk more about your experience working at Coke Studio and Geo TV Network? Sure. Because I could see from your profile the media you have put in your link. Maybe those are the projects that you work with. So how was working there? Because like Coke Studio is something, of course, we admire, we appreciate, we respect, and like all those kind of adjectives towards the Coke Studio. And like, I'm so proud of you that you are such a diverse person and yet a teacher. We come to your teaching experience after Coke Studio. For sure. I feel like anyone who hears Coke Studios always brings like a very warm sentiment because of course, it is our national pride. And I was also very lucky and very fortunate to be able to do that because that was my first, like after graduating, first experience of working in a space where, you know, we're doing something which is so big. It feels like, oh, I'm part of the cricket team or something. But it was a very interesting and a very, for me, it was a very like broadening experience about how I saw the project coming into being because I remember there was हाँ मुझे एक बात मुझे याद है कि जब मैंने start किया था तो आप किसी चीज को स्क्रैच से होता हुआ देखते हो जहाँ पे सिर्फ एक आइडिया होता है कि अच्छा हम शायद इस चीज के बारे में बात करेंगे और जब वो एंड में आता है तो एकदम से तब्दील हो जाता है तो वो मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था क्योंकि मैं मैनेजरियल रोल था थोड़ा मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ था ज्यादातर मेरा काम ही होता था कि हम वी ब्रिंग द प्रोजेक्ट टुगेदर और उसमें बिकॉज हम मतलब मेरा थोड़ा सा क्रिएटिव बैकग्राउंड था तो हमारा उस तरह का भी इनपुट होता था बट मेरा थोड़ा सा आई वाज नॉट एज कनेक्टेड इन द क्रिएशन म्यूजिक की क्रिएशन में मेरा कोई उस तरह से हाथ नहीं था हाँ छोटे बहुत सजेशन कि हाँ ये हो सकता है वो सकता है वो था बट नॉट द एक्चुअल मेकिंग ऑफ द म्यूजिक बट मेरा कुछ बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट से मुलाकात हुई थी एंड फिर आपको रियलाइज होता है कि किसी भी कोई भी आप कला उठाएं आप ओवरनाइट देयर इज नथिंग लाइक एन ओवरनाइट स्टार व्हेन यू स्पीक विद दीस पीपल चाहे वो कोई बैकिंग वोकलिस्ट ही क्यों ना आई रिमेंबर वी हैड 2-3 हमारे पास बैकिंग वोकलिस्ट होते थे आप उनसे भी बात करें तो उन्होंने सालों की रियाजत की होती है और उसके बाद वो उस पोजीशन पे पहुंचते हैं एंड देन वी हैड अ बैंड जो कि उसको हाउस बैंड कहते हैं और उनका काम भी यही था कि बेसिकली दे सपोर्ट द सॉन्ग इन बिकमिंग व्हाट इट बिकम्स बिकॉज हमारा तो हमेशा फोकस सिंगर पे रहता है ना बट इनकी मेहनत भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज ये लोग हर लाइक देयर प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टेंटली एंड नॉट जस्ट कि हम इस कोक स्टूडियो के लिए करेंगे वो अपनी लाइक यू नो हर डिफरेंट सेशन प्लेयर्स भी होते हैं तो उसमें एंड पाकिस्तान में अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा म्यूजिक कल्चर डेवलप हुआ है बट उससे पहले ना इस तरह से म्यूजिक कल्चर हमारे आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे टाइम पे इस तरह से था बट ऑफ कोर्स बीइंग अ फुल टाइम म्यूजिशियन एक बहुत एक कमिटमेंट होती है बिकॉज यहाँ पे यू डोंट गेट पेड इट वाला म्यूजिशियन सो मैं बहुत आई वाज ऑलवेज इन ऑ ऑफ दीज सेशन प्लेयर्स हु आल्सो द हाउस बैंड मेंबर्स हु कंटिन्यूड देयर वर्क एंड और बहुत लाइक डेडिकेशन से दैट शो अप हमेशा टाइम पे और हम आके इसको परफॉर्म करेंगे एंड देन द मेकिंग ऑफ द म्यूजिक मैंने जो मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग था जो हमेशा से मैंने लिरिक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था अच्छा ये बनी कैसे इसकी कहानी क्या है तो मैंने वहां से भी बहुत सीखा कि अच्छा ये बेसिकली जीरो से स्टार्ट करते हैं देन दे काइंड ऑफ मेक इट इट्स ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ मुझे अब थोड़ा सा इतने याद नहीं है सॉन्ग्स बट जब हमने देखा था कुछ कलाम भी उसमें इस्तेमाल हुए थे आई रिमेंबर देयर वर सम कवाल्स आल्सो जो आए थे उसमें व्हेन हमारे in our season and all of it was like so big for me this is happening in front of me. It was very nice for me. What I learned really was
एक तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी थोड़ी सी बेहतर करें, बिकॉज यू कांट जस्ट बी इन योर हेड, आपको कम्युनिकेट करना होता है अगर मैनेजर रोल में दैट। उसके अलावा मैंने टीम वर्क देखी, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक रियली चैलेंज्ड इन अ लॉट ऑफ वेज, but I think if you would ask me if I'd do it again, probably would not because it was a very exhausting experience for me also. Or I think it was just not the most best experience for me in terms of what I wanted to do with my skill set, but it was a very very good experience in terms of learning for me. Geo TV Network. Yes, it was so what happened was I was working with somebody और ने मुझे बताया कि हम लोग एक new media department start कर रहे हैं. It was I think in 2017 or 2018 in at Geo TV Network, and Geo TV is basically जो कराची में है और पाकिस्तान में, उनको पता है कि it's a very important हमारा network है, और उसका entertainment के जो लाइक जो उसका एंटरटेनमेंट वाला इदारा है, इधर एक न्यू मीडिया का नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है. मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था बिकॉज जब मैंने कोक फिनिश किया था, आई वाज रियली थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग थिंग्स लाइक अच्छा मुझे डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट है, मुझे वैसे भी स्टोरीज लिखने में इंटरेस्ट था. अभी भी आई काइंड ऑफ राइट देम, नेवर रियली शॉट देम एक्सेप्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री वर्क व्हिच आई विल शेयर लेटर. बट मुझे लगा था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज जियो रियली सस्टेन्स, लाइक उन्होंने जितने भी चैनल स्टार्ट किए अपना इंग्लिश का भी फॉर जितना भी टाइम वो रहा, दे रियली डू अलाउ फॉर दिस टू काइंड ऑफ फ्लरिश. तो मैंने स्टार्ट किया था उधर काम करना. तब इतना खास लाइक हमने कोई नई चीजें प्रोड्यूस करना शुरू नहीं की थी. हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन सी चीजें आप पाकिस्तान के लाइक बेसिकली टीवी शोज में से कौन से टीवी शोज इंटरनेशनली अप्रिशिएट किए जाते हैं. देयर आर सो मेनी दैट पीपल लव. हमने then we started putting a few and then we kind of learned कि अच्छा what is working, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. So मेरा बहुत there wasn't a very long experience for me, मगर तब मैंने basically जो DV PAL एक format होता है शूट का, और उसके पुराने जो कैमराज होते हैं उस पर सारी चीजें शूट हुई हुई थे. एंड इट इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. अब हमें आई थिंक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास मोबाइल कैमराज आ गए हैं, बट DV PAL में बेसिकली इस तरह से शूट होता था कि आपने शूट कर लिया, यू कांट इवन सी कि क्या हुआ है, वो एक फिल्म रोल पे आ गया एंड दैट्स इट, योर शॉट इज डन. एंड देन उसके बाद आके आप उसकी फिल्म डेवलप करके देखते थे अच्छा उस एक्टर ने सही एक्ट किया नहीं. एंड आई यूज्ड टू दिस जस्ट ब्लू माय माइंड बिकॉज हमारे पास डिजिटल कैमराज हैं, हमारे पास फोन कैमराज हैं, वी कैन नॉट इमेजिन कि DV PAL पे चीजें शूट भी होती थी. इन द काइंड ऑफ वर्क कमिटमेंट एंड आई एम श्योर कि जो उस वक्त की टीम होती होगी उसको इतना प्रिसिशन से हर चीज शूट करनी होती होगी. सो दैट रियली शोड. हमने फिर DV PAL की चीजें कन्वर्ट करके उनको देखा, देन वी क्रिएटेड देम फॉर ऑनलाइन media streaming platform. So that was like an experience in itself for me. So that was my very short experience with Geo. खैर मेरे नजरिए से तो नहीं, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ अब तक, और मैं हर किस्म की एज को मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्रॉम क्लास नर्सरी KG किंडरगार्टन से अब मैं एडल्ट लर्निंग में हूँ. मैं शायद अग्री ना भी करूँ कि टीचिंग एक बोरिंग प्रोफेशन है, लेकिन इन जनरल टीचिंग का जो है हमारे पास आउटलुक यही होता है. सो फॉर अ पर्सन लाइक यू जिसने और आपका टीचिंग से पहले ही आपके एक्साइटिंग और मजे के प्रोजेक्ट्स, एंड आई एम श्योर आपने जैसे मेंशन किया कि लाइक इवन इन टीचिंग यू आर डूइंग दिस कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स काइंड ऑफ थिंग. मेरा सवाल ये है कि हाउ डिड an exciting and adventurous artist such as you come into teaching, or आप इस वक्त कहाँ, मतलब where in Karachi are you teaching? So my first teaching opportunity came from my alumni, like from the organization or university I graduated from. I'm teaching at Karachi University at the Visual Studies department, and I graduated from the Visual Studies department. So that's how it came into being because my professor reached out. He was like, "Oh, we're looking for somebody. Remember, you're a graduate. So would you be interested to teach?" And I was like, "Of course, I would love that." Because when I was studying at Karachi University, जिनको पता नहीं है Karachi, I'm sure सबको पता होगा अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं. बट अगर नहीं पता तो कराची यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट एक सेमी प्राइवेट सेमी पब्लिक उनका डिपार्टमेंट है. तो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं उधर एक लैक ऑफ रिसोर्सेज के मसले के साथ तो हमेशा ग्रैपल कर रहे होते हैं. स्पेशली अगर हम एक डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान के बारे में सोचें तो एक
एडिशनल मसला हमेशा से रहता है। तो जब मैं अपने यूनिवर्सिटी ईयर्स में थी तो विजुअल स्टडीज एक हमें हमेशा से पता था कि अच्छा हमारे पास कम रिसोर्सेज है, हमें इसी के साथ प्रिंट भी बनाना है, मूवी भी बनानी है, हर चीज इसी में करनी है, नहीं होगा आपके पास। सो आई थिंक एज अ क्रिएटिव इट हेल्प्स यू बिकॉज आपके पास ऑलरेडी लिमिट्स आ जाती हैं, देन यूर लाइक अच्छा इन्हीं लिमिट्स में क्रिएटिव ओके आई विल वर्क विद व्हाट आई हैव, राइट? इट्स अ ग्रेट इट्स अ ग्रेट स्केल। ऑफ कोर्स it's challenging because आपके पास वो best equipment नहीं है या आपके पास वो best like एक resource नहीं है, but then you work with what you have and that's also I think a training जो कि मुझे visual studies की वजह से मिली थी. So when my professor reached out to me, I was very happy to go back and I started teaching there at the graphic design department. I started with teaching design. I used to teach a course started off with a course of called communications in design, and उसमें basically हमारा idea ये होता है that as a designer you find a voice that you want to work with, क्योंकि हम कहते हैं ना अच्छा हर एक की अपनी आवाज होती है, तो आप what is yours? So what was interesting for me was एक तो मेरे life like working experiences informed me a lot and then allowed me to create that course, but also I thought what was very interesting, like what was exciting for me is that I could see these kids becoming something in the process, like challenging भी होंगे उनके लिए difficult भी होगा, but हमें मजा आ रहा था because we were taking it as a playground from like मेरे दिमाग में था कि अच्छा ये एक experiment है, हम साथ में इसको कर रहे हैं, so let's see what becomes of it. And the students were very reciprocal, like they were receiving of what I was trying to do with them. And Karachi University का जो curriculum है, in a way it also allows you to be that open with the kids. I think again because it's a creative, like it's a like the program itself is creative, इसलिए भी for example अगर हम कुछ different कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़े से parameters ज़्यादा होते हैं, तो मेरे पास 2-3 leeways और इस तरह से leverage था कि मैं कर पाऊँ. लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आई मीन है मैंने खुद पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, मुझे नहीं याद आ रहा कि हमारे पास इतनी लिबर्टी हो कि हम कोर्स में डिजाइन कर सकें, लाइक द वे आपने मेंशन किया कि मैंने कोर्स डिजाइन किया और उसके बाद वेल ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज़ इट्स विजुअल मीडिया, आई मीन द कोर्स इज सपोज्ड टू बी द वे यू आर मेंशनिंग और इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स वही सब कुछ होना चाहिए. Lekin, can you talk more about the liberty to design a course? I mean, I find it really interesting. Yeah, I feel like there's some objectives that you have to meet. For example, by the end of the course, the student should be able to, for example, work with a particular software. And for example, by the end of the university, like this course, the child should be able to know these particular rules कि ताकि उनको वो एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए. तो वो तो आपने रिगार्डलेस वो चीजें करनी है. The way that I thought that we can do it is not by the conventional अच्छा चले हम इसको इस तरह से करते हैं. I was like let's Okay. try and bring about some tools from again my like again आप artistic research से ले लें, उन टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं यही चीज करने के लिए जिसमें आप थोड़ा सा फिक्शन भी डाल देते हैं, थोड़ी इमेजिनेशन भी डाल देते हैं. लेटर तो फॉर एग्जांपल आई कुड राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर आस्किंग फॉर समथिंग, और आई कुड राइट अ लेटर to a community in 2050 telling them that देखो meteoroid आ रहा है, come together and let's figure out a way to save the planet. Both में you're writing a letter, you're learning those skills, but in one you're just kind of pushing yourself a bit more and making them imagine a thing that doesn't exist. And then I think that's where something fun happens, where you're imagining कि अच्छा नहीं आप क्या करें, so I think इस तरह की liberty I'm sure design की वजह से भी थी. And yeah. No, इतनी तो खैर है. I mean, मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, for example, environmental sciences. So last week, actually, I had a class on a Saturday, और उसी Saturday पे we're celebrating SDGs week here, and उसी दिन पे उसी time पे, this time पे मेरी class थी, we had a biodiversity walk. So I mean, it's not like I wanted to skip the class and wanted to go for the walk, but then I thought कि मैं अगर जा रही हूँ तो why not have all my students. So my students are adult learners. Those are working professionals who are back in studies and want to learn about environment, or maybe they are working in some corporate and they want to learn about environment. So what I did, I invited all my students. So that wasn't the design of the course, that wasn't planned. कुछ भी नहीं था, and it was like वो एक हफ्ता पहले it was announced, and I emailed my students like, okay, this is the class time. I will send you the recording of the class. So we'll do the conventional thing, like let's go for that. So yeah, of course that's good.
happen. Is there anything else that you want to share about your background before we jump into the river project? I'm happy to jump into the river project. Okay. So Beenish, मैं जानती हूँ आपके प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन प्लीज अज्यूम कि मैं कुछ नहीं जानती. So अपने रिवर और कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, because the infographics you created, the stories you created, I love them. और आपकी especially जो eggs और pebbles वाली कहानी थी, like we had a speaker 2 weeks back, Fatma Khan, she mentioned the same story and I could only think of you. So like the floor is yours to talk about the project. Sure. I wanted to share one story, one project I worked on, and then come to this. I think in last year or earlier, somewhere around last year, I have a friend. She was working on with the fisher folk community in Karachi, and एक मच कचहरी होती है कराची के इलाके में, रेरी गोट के पास, जो कि ओल्डेस्ट फिशर folk community है. उधर उनका एक इवेंट था, और क्योंकि फिशर कम्युनिटी के साथ काम करी थी तो वो उधर गई थी. फिर ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे बेसिकली लोग गाने लिखते हैं, और उनको और ना गाने वो लिखते ही पानी के लिए. एंड मेरी मुझे वो बात इतनी हिट की, मतलब कोई पानी के लिए कैसे गाने लिख सकता है. मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी जाके देखूंगी. हाँ, आप कराची के लिए खत लिख सकते हैं, लोग गाने नहीं लिख सकते. दैट इज एग्जैक्टली. I think that's also what spoke to me. I was like, अच्छा, ये तो बड़ी मजे की बात है, I'll go. So she's like, हाँ ठीक है, तुम जाना, and then तुम उनसे पूछ के आना, वो फिशर women है, तुम्हें मिल जाएगा आराम से. अच्छा, मैंने कहा सही है. एक दफा I think रमजान का वक्त था, last year, I'm forgetting the timeline, but रमजान था और मैं रेडी गुड गई, and then मुझे इनका नाम नहीं पता था, but मुझे कुछ रेफरेंस पता थी, तो मैं I went to them और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे सुगरा बीबी रहती हैं. उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम आपको ले जाते हैं. हम उधर पहुंचे, उनके घर गई, फिर उनको बताया कि मैंने सुना है आप गाने लिखती हैं, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि आप क्या गाने लिखती हैं, तो मैं आ गई हूँ आपके पास, आप मुझे कुछ बात करने आई हूँ, जरूरी नहीं आप मुझे सुनाएं ये वो. तो she was so warm and so beautiful in a way कि नहीं नहीं तुम आओ, मैं तुम्हें अपने गाने सुनाती हूँ. वो गई अपने किचन, एंड देन उनके पास एक तसला था जिसमें आप रोटियां बेलते हैं, वो लेके आई, एंड अपनी बहनों के साथ स्टार्ट प्लेइंग इट फॉर मी, एंड देन हमने गाने गा रही थी. इतने खूबसूरत गाने हैं, मे बी इफ यू हैव टाइम मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ सुनाऊंगी. एंड देन मेरी उनसे थोड़ी बातचीत हो गई. फिर मैंने उनको बताया कि अच्छा मेरा क्या बैकग्राउंड है, मुझे बड़ा शौक है पोइट्री वगैरह का और गानों का और ये वो. उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा मैं ये करती हूँ, बट एट द सेम टाइम वो सिर्फ ये नहीं करती, शी डज सो मच मोर. अब फिर हमारी इसी पूरे साल थोड़ी ऑन ऑफ बातचीत चलती रही. इवेंचुअली फिर मुझे मौका मिला. बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बता देती हूँ. उनका नाम है सुगरा बीबी. वो रेरी कोट आई हैं कराची, एक आइलैंड से जो कि कराची के थोड़ा सा करीब था, बट आइलैंड में ये हो गया था कि अगेन क्लाइमेट की वजह से वहाँ के पानी का लेवल ऊंचा हो गया था, और जहाँ पे रिसोर्सेज थे आइलैंड के वो कम होते जा रहे थे. तो कहा हम शहर आ जाते हैं. तो वो 26 फैमिलीज के साथ यहाँ कराची मूव हुए थे. और जब ये कराची आए थे, रेरीगुड में ना पानी था, ना रोडें प्रॉपर बनी हुई थी, ना इलेक्ट्रिसिटी की कोई इतनी सहूलत थी. बट क्योंकि ये लोग आ गए थे, तो इन्होंने ये नहीं किया कि अच्छा अब हमने इस तरह से रहना है. इन्होंने 20 औरतों को जमा किया और एक छोटी सी तंजीम बनाई औरतों ने मिलके, क्योंकि मर्द तो ज्यादातर पानी में चले जाते थे फॉर फिशिंग. दिस इज अ मेनली फिशिंग कम्युनिटी. तो ये लोग सारे समुद्र में चले जाते थे. उन्होंने कहा मैं पीछे बैठ के ये नहीं कह सकती कि अच्छा मेरे मियाँ चले गए, मछली आएगी तो नहीं. 20 औरतें आई, इन्होंने अपनी एक तहरीक बनाई, और फिर इन्होंने अपने राइट्स के लिए एडवोकेट किया. ये पैदल जाती थी और कहती थी कि नहीं हमें आपने कहा है कि आप जमीन बना के दें, रोड बना के दें. जितने भी उनको पॉलिटिकल एक्सेस था वहां पे गए. अब वहां पे एक पक्की जमीन है, वहां पे उन्होंने पानी का करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी अपनी एरिया में करवाई है. तो इनकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज क्लाइमेट जिस तरह से तब्दील होता जाता है. पहले इनके पास एक बोट हुआ करती थी जिसमें जाते थे, अब इनके पास नहीं है. तो ऑब्वियसली इन्होंने जरिए बनाए अपने लिए कि किस तरह से जमीन पे रहने के लिए. मगर इनकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आप देख सकते हैं कि अच्छा ये इनकी स्ट्रगल भी है, बट इन्होंने अपनी होप नहीं खोई, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मूवमेंट, स्पेशली द मूवमेंट दैट वर इन क्लाइमेट की. आप कभी भी अपनी होप नहीं खत्म कर सकते कि अब तो है, अब तो हो गया, अच्छा जो भी. सो मुझे फिर कुछ टाइम बाद एक मौका मिला था डॉक्यूमेंट्री पे काम करने का.
जो कि एक फंडेड प्रोजेक्ट था, एक फोटो ऐसे हमें क्रिएट करना था। तो डॉन और शिरकतगाह की तरफ से हमें फंडिंग दी थी। तो फिर मैंने इनसे पूछा था कि मैं आपके ऊपर बना सकती हूँ। तो सुग्रा बीबी ने कहा था ज़रूर, मुझ पर लिख लिया, मुझ बना। फिर मुझे अपनी पूरी कहानी बताई थी, और तब से मेरा थोड़ा इस तरह दिमाग चलना शुरू हुआ था कि अच्छा, ये भी तो स्टोरीज हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट कहानियां, हम इन लोगों के बारे में बात करना भी जरूरी है। और क्योंकि दे आर ग्रैपलिंग विद क्लाइमेट इश्यूज एवरी डे, but we don't talk about them because we don't think about those things. तो लोगों को बहुत अच्छी लगी कहानी, and then I took it back to her, I showed it to her, तो बड़ी अच्छी लगी। इसने कहा अच्छा, because again she was like, अच्छा सही, किसी को खुशी हुई है मेरे काम से, बस मेरे लिए काफी है। So we did that small project. उसके बाद फिर why I'm adding is this story before I start my river work is that मैंने कराची को हमेशा एक समुद्री शहर की तरह देखा था कि अच्छा यहाँ पे तो समंदर है, ये कराची की खास बात है। And I've lived here for a very long time. फिर जब ये रिवर वाला प्रोजेक्ट आया था, उससे पहले इसी के दौरान एक अवेयरनेस स्टार्ट हुई थी मेरी कि कराची में तो दरिया भी है, चाहे वो दरिया मर रहा है या दरिया बीमार है या दरिया मुसीबत में, यहाँ पे दरिया भी हैं। एंड देयर टू मेन रिवर्स इन कराची एट द मोमेंट जो इसको सस्टेन करते हैं। तो हम हमेशा कराची को एक समुद्री शहर कहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि तो एक दरिया वाला शहर भी है। जिन दोनों रिवर्स का मैं जिक्र करूंगी, वो एक लियारी है और दूसरा मलीर है। लियारी के ऊपर अभी एक इन्होंने व्हाट्स इट कॉल्ड एक्सप्रेसवे बना था, जिसकी वजह से लियारी नदी काफी अब एक बहुत नदी से एक नाला बन गया है, जो कि आई एम श्योर सब शहरियों के लिए एक मसले का मतलब इट्स सैड मोमेंट ऑल्सो, बट इट्स ऑल्सो समथिंग टू थिंक अबाउट। एंड राइट नाउ मलीर के साथ भी तकरीबन इस तरह के हालात हैं, नॉट दैट के वो एक नाला बन जाएगा, और हमारी उम्मीद है कि वो ना बने। बट जब मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो इस अवेयरनेस के साथ किया था कि अच्छा, मलीर एक नदी है, एक रिवर है जो कि कराची में है। सो बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा हमारा जो प्लानिटरी इमेजिन से रिलेटेड काम है उसके बारे में बताती हूँ। सो इन ड्यूरिंग समर्स हमने एक फेलोशिप मिलकर काम किया था। इट वाज मी, देन देयर वाज रुपेश फ्रॉम नेपाल, देयर वाज लसाना, वो अफ्रीका में है, रवांडा में, एंड देन देयर इज इसाबेला जो कि एरिज़ोना में होती हैं। और हम सब के डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, एक फॉरेस्ट्री में है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एक लीडरशिप पे काम करते हैं। एंड हम चारों ने मिलके सोचना शुरू किया था कि हम रिवर्स के बारे में कुछ करना चाहते हैं। एंड हम सब सोच रहे थे कि चलो कोई एक रिवर उठाते हैं और उसके ऊपर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, यू नो वी कैन राइट अबाउट इट, एंड दैट मेक्स सेंस फॉर अस। एंड हमारे जो मेंटर थे उनका नाम था जैक, वो WWF के साथ काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हो कि तुम सब बहुत मुख्तलिफ लोग हो और बहुत मुख्तलिफ इलाकों से आते हो। rather than taking it as a problem, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। एंड देखो कि हर एक के पास एक एक रिवर है जिसके बारे में वो कुछ महसूस करता है, जिसके बारे में कुछ काम कर सकता है। And that's where my awareness came back to what do I love the most, or what am I the closest to? वो मेरा शहर है। So मैंने कहा कराची में भी तो दरिया है। And then that's how I started thinking about Mali. और फिर हमारा ड्यूरिंग दैट टाइम एक समर स्कूल हुआ था जो कि इंडिजिनियस अलायंस ऑर्गेनाइजेशन ने कराची में करवाया था। वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ भी, और जो भी इंटरेस्टेड है उनको, वो लेके गए थे मलीर। मलीर कराची के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है। इट्स अ फ्री फ्लोइंग रिवर, मगर ये सालों साल नहीं चलता, इंटरमिटेंट हो गया है अब क्लाइमेट की वजह से भी और डिफरेंट वजूहत की वजह से भी। तो जब हम वहाँ गए थे तो इन्होंने हमें सारे पुराने वेल्स दिखाए। मलीर का अराउंड एक फ्रॉम द 10th सेंचुरी वहाँ पे ग्रेवयार्ड्स हैं जिसके ऊपर पुराना चौखंडी आर्ट हुआ है, हमने वो सारा जाके एक्सप्लोर किया था। एंड देन अभी करंटली कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन एरियाज बन रहे हैं जो कि गेटेड सोसाइटीज है। वन ऑफ देम इज बैरियर टाउन, देन देयर इज DHA सिटी, ये सारे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और व्हाट इज हैपनिंग इज ये सारे एरियाज रिवर की जो रिपेरियन फॉरेस्ट होता है, जो कि ग्रीन एरिया होता है, या कराची की जो ग्रीन बेल्ट है, इसको कट करके यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। इवन दो फ्रॉम like if you're thinking about long term and environmental point of view, it does not work, it's not a good idea. चलें, ये तो उसके लिए लोग उस पर बात कर रहे हैं, कोशिश है कि you know that doesn't kind of grows from more
from currently what it has become. But the second very important problem that's happening इस वक्त वो है मलीर एक्सप्रेसवे. मलीर एक्सप्रेसवे बेसिकली उसका आइडिया ये है कि वो मलीर से बनेगा, इन सारी हाउसिंग सोसाइटीज को मेन सिटी से कनेक्ट करेगा. एंड द क्लेम है कि वो 15 मिनट में वहाँ पहुंच जाएंगे. हाउएवर ये पूरा जो क्लेम है ये सिर्फ एक क्लेम है. देयर इज नो एक्चुअल रिसर्च के ये आपके साथ होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी है. मगर इसकी कंस्ट्रक्शन में जो एरिया तबाह किया जाएगा उसमें नायाब किस्म के पौधे हैं, उसके अलावा बहुत सारे जानवर हैं एंड बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि मली के इंडिजिनियस बर्ड्स लाइक इंडिजिनियस बायोडाइवर्सिटी है. एंड एट द सेम टाइम वहाँ से लोगों को भी हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपके एक तो शहरी बेघर हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी जो ग्रीन एरिया है, कराची का सबसे फेमस ग्रीन एरिया, वो तबाह हो जाएगा. एंड ये एक्सप्रेसवे अभी मलीर रिवर के बिल्कुल रिवर बेड में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी भी जैसे आई टेल द स्टोरी दैट यू आर मेंशनिंग स्वाबी वाली, वो एक आई लव द स्टोरी आल्सो. हमने एक WWF के ऑर्गेनाइजेशन में कोई थे जिन्हें हमारे साथ शेयर की थी. स्वाबी में बेसिकली एक फोकलोर है कि दरिया जो है उसको हम उसकी याददाश्त होती है, और जो उसकी याददाश्त है उसके मुताबिक जो पेबल्स होते हैं या जो छोटी छोटी पत्थरी होती है उसके अराउंड, उसको अपने अंडे समझता है. तो जब भी दरिया जाता है तो अपने अंडे छोड़ के जाता है, बट जब वो वापस जा रहा होता है या जब उसको कहीं से वो क्रॉस करता है, वो वापस अपने अंडे लेने आता है. तो फॉर एग्जांपल आपने दरिया के करीब अपना एक फ्लैट खड़ा कर दिया, बहुत करीब अपने कोई होटल बना दिया है, तो वो साथ में आके वो बेसिकली वापस आया आपके फ्लैट को तबाह करने नहीं है, वो अपने अंडे लेने वापस आया है. एंड दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रक्टिंग टू क्लोज टू द रिवर इज नॉट अ गुड आइडिया, इवन दो इट्स अ फोकलोर, मे बी देयर इज नो ट्रूथ टू इट, बट दैट इज देयर वे और द लोकल्स वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कंस्ट्रक्शन इससे दूर करनी है. At the same time, अभी हम मलीर में भी ये कर रहे हैं कि we're choking the river, shrinking it. But again, when the river will come, when there will be a higher flow of the river, वो अपनी सारी constructed area को तबाह कर देगा. तो जितने भी लोग house scheme अभी create कर रहे हैं, they're forgetting this very important fact. So अभी हमारी रिसर्च इसी के अराउंड थी. मैंने बहुत सारे जो वहाँ के लोकल्स हैं उनसे बात की, उनसे हमने कहानियाँ पूछी कि अच्छा पहले क्या होता था, अब क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट. मेरी एक खातून से बात हुई, उनका नाम है लाल बेगम, और वो एक उसी एरिया के रहने वाली हैं. वो बता रही थी कि औरतों के लिए मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आप जितनी भी डिबेट कर लें, और एक औरत का दूसरी औरत से मिलना, जस्ट जनरली मुलाकात, को बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट्स नॉट एनी लेस फॉर मेन ऑफ कोर्स, but for women just as a social being it's important. And because of this and again in Malir they don't have like these cars, वो गाड़ियां लेके यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, वहाँ पे गोट पे देहात बने हुए हैं. सो कह रही थी कि जब ये एक्सप्रेस वे बन जाएगा, मैं अपने घर वालों से मिलने, जो कि उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने नहीं जा पाऊंगी, बिकॉज ये एक्सप्रेसवे उस बीच में खड़ा हो जाएगा. और फिर अगर मुझे जाना होगा तो मुझे एक बहुत महंगा व्हीकल जैसे रिक्शा करा के या कुछ महंगा करके जाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरी मुलाकात उनसे होना काम हो जाएगी. एंड सारी बातें जो कि इन्वायरमेंटल होती हैं उसमें हम ये भूल जाते हैं कि इंसान बहुत अहम हिस्सा है इन्वायरमेंट की किसी भी चीज का, और हम उसको निकाल देते हैं. हम समझते हैं अच्छा इन्वायरमेंट मुझसे दूर है, मैं अलग हूँ, नेचर अलग है. नो, बट इट्स ऑल द वन. एंड while during the research मुझे और रियलाइज हो रहा था कि हम ये भूल रहे हैं कि अच्छा मेरा एक रिवर से तो रिलेशनशिप है, but as a human मेरा एक रिवर के साथ रिलेशनशिप, and we can never forget or leave that out of the equation. Yeah. Sorry, I can't hear you. I think you're on mute. Yeah, sorry. मैं भी ये mention कर रही थी कि during these podcast series मैंने भी मतलब first आपकी अपनी एक लिमिटेड लर्निंग, आपका बॉल होता है, बबल होता है, आप उसके बाहर जब आप लोगों से मिलते हो, सोचते हो आप बहुत कुछ नया सीखते हो. तो स्पेशली मैं यही चीज बार बार शायद हाईलाइट हुई है हमारे सीरीज के में भी कि हम सारे जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी और ये वो फॉर क्लाइमेट, इवन टू सॉल्व दैट, उसमें हम शायद अपने मसलों को, इंसानियों के मसलों को बढ़ा रहे हैं. लाइक हम टेक्नोलॉजी को तो एज दे रहे हैं, लेकिन
उससे क्या हमें हम वाकई में खुश हैं कि हमें लाइक इंसान जो हमारा है अगेन उसका कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, that's a different thing. I like that's a really beautiful thing that you just mentioned. Binish, we are about like reaching the end of the session time. मेरा एक important question आपसे होगा, like can you reflect on किस तरीके से, I mean, of course, all the stories that you mentioned and like all of your experience just shouts for it कि हम किस तरीके से art हमें help कर सकता है towards solving the climate and environment. But is there any more like your future projects या फिर in general आप audience को क्या कहेंगी कि how can art help art or graphic designing or other forms of art? Like, I mean, I am illiterate in art. I don't know किस तरीके से that can help environment and climate action. I mean, apart from like raising awareness, how can it actually help solve the issue? Of course. I also feel like I'm still a student of art, so I'm still just as good as you are. I'm still learning. But I feel like art का एक बहुत अहम चीज होती है, वो आपको महसूस करने पे मजबूर करता है. बेसिकली आपकी सेंसेस में एक अवेयरनेस पैदा करता है, जो कि आई फील लाइक जब भी हम मसलों में रहते हैं, हम कहते हैं कि ओ हम रेजिलिएंट बन गए, हम सख्त हो गए, हमें महसूस नहीं होती कोई चीज. जो कि चलो अगर आप एक मुश्किल हालात में हैं, वो आपको ये एक एटीट्यूड आपको आपको हेल्प करता है टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट इस तरह से अगर आप जिंदा रहेंगे तो आपको कोई चीज महसूस नहीं होगी. Art kind of helps us understand or feel basically, and that is important क्योंकि वो आप उसको verbally नहीं explain कर सकते. अच्छा मेरे दिल में ये महसूस है, मेरे दिल में नरमी पैदा हुई या मुझे एक एहसास जागा. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे फोटो एसेज होते हैं where I remember this one, मैंने अपने बचपन में देखा था that there was this young kid और एक vulture था, और vulture was edging towards eating this child जिसकी सारी ribs दिख रही थी. और आई थिंक एक फोटो ऐसे लगे कि फोटोग्राफ थी ऑन एनोरेक्सिक बच्चा था. आई थिंक अफ्रीका की एक स्टोरी थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट वो मेरे दिमाग में इस तरह से एच हो गई थी कि क्योंकि उसने मुझे एक चीज महसूस करा दी थी कि ये भी हो सकता है कि हम यंग चाइल्ड, उसके कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो जरूरी है कि अगर इफ यू कैन गिव यू गिव, राइट. और यही चीज होती है जो कि आर्ट आपको कर लाइक जो आर्ट आपको कर सकता है, इट कैन जस्ट काइंड ऑफ मेक यू फील. एंड यही फीलिंग जरूरी है टू रिमाइंड अस. चाहे मैं जितना रिसर्च लिख लूं, चाहे मैं जितना सीख लूं, जब तक आपके दिल में एक एहसास नहीं जागेगा, यू वॉन्ट वांट टू चेंज एनीथिंग. यू लाइक हाँ सही है. द मिनट यू फील इट, I feel like it becomes harder because feelings, as an artist भी or generally भी, I feel like feelings are something जो कि वापस आती रहती हैं until you hear them, until you address them, until you speak with them. चाहे वो sadness हो, चाहे वो happiness हो, चाहे वो joy हो, चाहे वो जो भी feeling हो, आपने जब तक उसको tension नहीं दी तो एक बच्चे की तरह कुछ ना कुछ करता रहेगा just to get your attention. And I feel like small steps like that, of course, art will create awareness, but I think that art will also help us feel again, which I think is very important. Okay, we have a couple of more minutes. So what's next in your pipeline? आपके अपने personal कौन से, apart from the teaching, of course, is there anything else interesting that you're looking forward to? Yes, actually, I'm working on an art exhibition, inshallah, जो कि अगले हफ्ते है. उसका नाम है Lost Souls. Not soul, but also जूतों वाली soul. Okay. But it's a word play. It is both. Okay. Basically, जब आप कराची के समंदर पे जाते हैं तो आपने बहुत सारे जूते देखे होंगे जो कि एक एक पेयर रह जाता है. और हमारा एक छोटा सा कलेक्टिव है, उसका नाम है कुकू कलेक्टिव. देयर जस्ट बंच ऑफ आर्टिस्ट्स कम टुगेदर. हमने ऐसे एक दूसरे से सवाल किए थे, आते कहाँ से जूते, इनकी क्या कहानी है. और इसी से हमने थोड़ा सा इसको आगे सोचा कि यार क्या लोग फेंक के चले जाते हैं, क्या लोगों के पास इतने जूते हैं कि जूते फेंक के चले जाते हैं. एंड then we started thinking about consumption habits, but then we were also thinking कि इस इंसान की क्या कहानी हो सकती है, या जूतों का क्या मकसद है, हम जूते पाँव में क्यों पहनते हैं, मतलब क्या वो प्रोटेक्शन के लिए है, क्या वो कंफर्ट के लिए है, क्या जूता आपको कोई आपका सोशल स्टेटस डिफाइन करे, व्हाट इज इट दैट दीज lost souls are telling you. So usko inshallah I'll be curating over the weekend, और ये TDF में इसका डिस्प्ले होगा.
जूतों को लेके हमने बस कहानियां बनाई हैं, इसका सवाल छोड़े हैं, हमारा कोई अभी हमारी एक रिसर्च ये है कि अच्छा इन जूतों की कहानी क्या है, हमें नहीं पता अभी, शायद by the end we'll figure something out. Right now we're just trying to explore what it is, and we'll be fanatics coming together to talk about it. So yeah, that's what's in my pipeline. That's lovely. Thank you so much, Beenish. मैं बस यही कहूँगी कि I mean, आप जैसे लोगों से मिलके जो है ना, like especially like I wouldn't say just art, like the way you were mentioning कि art से हमें sensation और feeling आती है, so I could feel similar कि आप जैसे लोगों से मिलके हमें एक sensation आती है कि there is yet hope in Pakistan, and like there's so much amazing stuff that's happening. Last week we had a meeting with Azal. She is yet another amazing person doing amazing in her respective field. So we, on behalf of Climate Action Pakistan, are really proud of you, and thank you so much for your valuable time and your input. We will be looking forward to your exhibition. If I find it on LinkedIn or your any social media, I'll share it on my platform. With this, I'll end it, and thank you so much. Thank you, Lara. Thank you. Bye bye. Bye bye.